Good morning to all the seniors, respected ED safety, ED HR LND, all the EDs who have connected from the plants, all the senior officials, my colleagues, and all the members or the participants from the finalist teams of the Chairman's Trophy for Young Managers 24-25. It's a last year's Chairman's Trophy finalist teams. Will be listening shortly, sir. On behalf of Management Training Institute, Ranchi, and also along with the Sales Safety Organization, it is my privilege to extend a very warm welcome to all of you for this very important meeting themed as Transforming Safety Culture in Sale Way Forward, which was also the theme for the Chairman's Trophy for Young Managers last year, of whom the participants we will be listening today. I am Rajesh Kumar, sir, AGM HRLND at MTI. And sir, as we all are aware that safety is not merely a compliance requirement for us in our organization, but also a reflection of our organization value and the leadership commitment, sir. Please mute, sir. Over the years, numerous initiatives have been done in our organization at central level also, across the plants also at the mines levels and different units level to strengthen our systems, processes, and also our people capabilities. We have engaged consultant, we have taken numerous initiatives, and it's a very ongoing effort. However, as we also strongly believe that as the environment is evolving and the operational complexities also increase, there is a renewed urgency to rethink, reinforce, and re-energize our approach towards the safety culture transformation, which is ongoing in our organization. So, in this context, last year theme of the Chairman's Trophy for Young Managers was transforming safety culture in sale way forward. Across sale, different plant and units, numerous teams have participated at the local level also. And further, as per the structure of the competition, there were the seven finalist teams, 21 members were there who were there for the competition. However, taking a cue forward from the competition towards the collaboration, sir, we had a follow-up workshop of 2 days workshop held at MTI in August, which brought together all the team members, not as a competitors, but as a collaborators. All the bright young minds from across the sale who were the finalists for the Chairman's Trophy for Young Managers. Rajesh, you are Together, not audible. sir, Sir, is audible here, sir. it might be sir at your local issue, sir. I would request कि एक बार sound फिर से join कर लें, sir. Okay, sir. Thank you, sir. So I will continue, sir. So they have developed, they have studied the critical areas. They have also benchmarked the best practices and also proposed the innovative strategies. Okay, sir. I will try to use more Hindi, sir. थैंक यू सर। तो इस सारे CTYM की फाइनलिस्ट टीम मिली, उन्होंने कलेक्टिवली अपने इनसाइट्स को अलग अलग 6 एरियाज में प्रेजेंट किया है सर। और उसके बेसिस में उन्होंने रिकमेंडेशन किया है। फॉर एग्जांपल द एरियाज वेयर लाइक बिहेवियर इंटरवेंशन, डिजिटल इंटरवेंशन, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट, जस्ट टू नेम अ फ्यू। और ये सारे एरियाज में टीम्स ने वर्क करके अपने रैशनल और रिकमेंडेशंस प्रेजेंट किया है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में। और ये कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट लेके आ पाएगा अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा सब जगह। तो सो आईड लाइक टू विदाउट further much from my time, from my side, sir. I'm respecting that we have a senior leadership across all the plants. So I would request to teams to come forward for their discussion. But before that, for the background of the program, with your permission, may I request EDHR LNT to kindly deliver the opening remarks and set context for today's deliberation, please. Sanjay. थैंक यू राजेश। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रेस्पेक्टेड ईडीज, सीनियर कोलीग्स, हमारे सारे हेड्स ऑफ ऑपरेशन यहाँ हैं, सारे हेड्स ऑफ सेफ्टी यहाँ हैं, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स यहाँ, हमारे कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव्स भी यहाँ साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे CTYM के लास्ट ईयर के जो जितने भी फाइनलिस्ट टीम हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑनलाइन इंटरेक्शन में ज्वाइन करने के लिए। और ये इंटरेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेफ्टी हमारी साझा जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और हम सबको इस पे विचार विमर्श मंथन करना है कि
जितने भी प्रयास हमारे हों वो सफल हों, सार्थक हों, और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, ताकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, जो राकेश जी बोलते भी हैं एथिकल स्टील, ब्लडलेस स्टील होना चाहिए, वो हमारा रहे। और इस चीज के लिए हमें ये भी समझना है कि ये कोई एक चाबी चलाने से चलेगा नहीं। हमको सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट लानी है, टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट लानी है, हमारे प्रोसीजर चेंज करने हैं, प्रोसेसेस में मॉडिफिकेशन करनी है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा अपना अ, अपनी सोच और अपना व्यवहार सेफ्टी के प्रति बदलना है, कि कोई भी अनसेफ चीज़ ना हो। अब होता यह है कि हम अलग अलग कंसल्टेंट से जब राय लेते हैं, तो वो अपने हिसाब से, उनका कोई फ्रेमवर्क होता है, उस हिसाब से वो कुछ राय देते हैं। कहीं बाहर कुछ अच्छा होता है तो कुछ राय देते हैं, हम आधा सुनते हैं आधा नहीं सुनते हैं। कुछ चीज़ें हमको लग रहा है यार हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये तो कहीं और होता होगा, यहाँ नहीं होगा, तो भले उनको नहीं बोले लेकिन मन में वही सोचते हैं। तो हमारे अपने बंदे जब तन्मय होके बहुत देर तक रिसर्च करके जब कुछ निकालते हैं, तो वो ग्राउंड रियलिटी, ज़मीन की स्थिति क्या है, वो देखते हुए करते हैं। तो चेयरमैन ट्रॉफी में हमने वही किया था कि भाई ये कंसर्न है, आप रिसर्च कीजिए, आप सब जगह देखिए क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, और आप अपनी तरफ से सेल को कैसे आगे ले जाना है उसके लिए अ, आपने कुछ रिकमेंडेशन दीजिए। तो जब तक कंपटीशन था, लेकिन हमने ये कहा कि बात कंपटीशन की नहीं, हम तो कल्चर बदलना चाहते हैं। ये सब लोगों ने बहुत गहन अध्ययन किया है, तो उसको थोड़ा सा मिला के, ज्वाइन करके एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बना दी जाए। अच्छा, मुझे कभी कभी शायद अंग्रेजी भी बोलनी पड़े, क्योंकि हमारे सेलम से भी ज्वाइन किए हैं लोग, तो वहाँ दिक्कत होती है, दे 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 फाइंड डिफिकल्टी इन हिंदी। सो एक कॉम्प्रहेंसिव एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई, कि सेल को आगे ले जाने के लिए अभी तक जो काम हुआ उसको सम्मिलित करते हुए, आफ्टर कंबाइनिंग ऑल दैट, आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल दैट एंड सिनर्जाइजिंग, उसको आगे ले जाके हाउ डू वी टेक सेल फॉरवर्ड। एंड हमारे बंदे हैं, दे आर यंग पीपल, आवर पीपल, enthusiastic people, people who can think about possibilities. So they've given a lot of ideas. And ultimately, the organization has to look at those recommendations and figure out how they can make them useful, actionable. So they have done their part. उन्होंने अपना अपने हिस्से का काम, की रिकमेंडेशन क्या क्या होना चाहिए, उसका एक रैशनल भी था, क्यों बोल रहे हैं, और एक रिकमेंडेशन का सेट दिया है। अ, जो ऐसा नहीं है कि वो ये बोलता है कि जो पुराना किया वो सब बकवास है। अ, हर बड़ी इमारत की नींव जो पहले किसी लोगों ने काम किया होता है उस पे बनती है। तो जो काम हमने किया है सेल में, आप उसको कम ना आके बहुत काम किया है, बट इससे आगे भी हमको जाना है। तो उसी नियत से ये प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, ताकि वो जो मेहनत उन्होंने की है वो कंपनी में यूज हो, सार्थक हो। एंड फ्रॉम ए लर्निंग पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, इस साल की थीम है कि वन सेल। CTYM की थीम ही इस साल की वन सेल है, कि हम कैसे एज वन सेल सिनर्जाइज करें, आपस में कोलैबोरेट करें, अलाइन हो जाएं, ताकि सेल में जो बेस्ट है वो सब जगह हो, कहीं पे भी अगर बेस्ट है वो सब जगह हो, कहीं भी सिस्टम से हार्मोनाइज हो और एक साथ आगे बढ़े। जब हम एक साथ एक कदम ताल पे चलेंगे तो सेल और बहुत ऊंचाई तय करेगा। तो उसी क्रम में हमने इन सारी टीम्स को, फाइनलिस्ट टीम को, जो अलग अलग प्लांट से बुलाया, कि नहीं, सेल के लिए रिकमेंडेशन दो, तुमने हो सकता है लिमिटेड कुछ देखा हो, आपस में सीखो और सेल के लिए रिकमेंडेशन दो। तो ये दीज आर द रिकमेंडेशन दैट दे आर गिविंग, बोथ ऑन सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, कल्चर, स्किल सेट, सब चीज़ों के लिए। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द हेड्स ऑफ वर्क of all the plants. I'm grateful to all the heads of safety, and all the senior executives are joining here, and our employees, कि वो इस मुहिम में सम्मिलित हुए हैं। एंड इस उम्मीद के साथ कि इसको बढ़िया से यूज़ किया जाएगा, और हम सेल को और भी आगे ले जाएंगे। मैं आप सबका फिर से अभिनंदन करता हूं। एंड मैं राजेश को
रिक्वेस्ट करता हूँ कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर इंसाइटफुल ओपनिंग रिमार्क्स और आपके मोटिवेशन के लिए सर। आपकी गाइडेंस हमेशा हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और इस मीटिंग में सर हम सब के लिए प्रेरणादायक है सर। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कंटेक्स्ट सेटिंग के लिए थीम को ध्यान में रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे ईडी सेफ्टी के रामाकृष्ण सर को टू प्लीज काइंडली शेयर द योर पर्सपेक्टिव सर, प्लीज Thank सर। you, Rajesh. Respected राकेश जी, धर साहब, और दत्ता जी, और बाकी all the friends and colleagues and the participants who have joined on this VC. This one regarding transforming safety culture in SAIL, a way forward. The topic chosen is very apt for the day. Again, the last, say, few years' efforts are really changing our thought process. अदरवाइज सेफ्टी को हम लोग एक बोझ की तरह लेते हैं। माने एक काम है, इसको करना है। माने कोई बड़ा साहब दिख रहा है तो तुरंत हेलमेट पहनो, या कोई सीजीएम साहब सामने से आ रहे, अरे अरे तुम जूता नहीं पहना, अरे पीछे मुड़ जाओ। From this kind of attitude, we are changing that. Okay, we have to be ready for all jobs at all times. देखिए, लोग बहस करते हैं क्या पीपीई पहनने से क्या चोट नहीं लगा, ये नहीं होता है क्या, एक्सीडेंट नहीं होता है। इट डजंट मीन दैट इट डजंट मेक एनी एक्सीडेंट, बट इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। द एटीट्यूड ऑफ यू टुवर्ड्स सेफ्टी गिव्स यू कॉन्फिडेंस। एक कार को 110 के रफ्तार में बिना सीट बेल्ट बांधे चलाने का, सीट बेल्ट बांध के चलाने का डिफरेंट फीलिंग होता है, कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। ऐसे ही मारुति 800 को और एक वॉक्सवैगन को चलाने का हाई स्पीड में, वो भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, क्योंकि इसका सेफ्टी रेटिंग अलग है, उसका सेफ्टी रेटिंग अलग है। सो एंड और एक चीज है, लोग जो है ना, जब भी काम करते हैं बोलते हैं सर, सो काम के इसके लिए प्रेशर था, इसीलिए हम लोग ऐसा हो गया वैसा। बट इज इट रियली सो? जब हमारा काम को प्लान किया जाता है या हमारा कैपेसिटी जब सेट किया जाता है, इट हैज गॉट ऑल द सेफ्टी नॉर्म्स इनबिल्ट इनटू दैट। पूरा सेफ्टी को ख्याल रखते हुए वो टारगेट या वो कैपेसिटी ऑफ द मशीन और द प्रोसेस सेट किया जाता है और द शॉप सेट किया जाता है। लेकिन उसमें भी नेम प्लेट कैपेसिटी अलग होता है, रियल कैपेसिटी अलग। So when we are able to achieve the things with this safety, then only we can say we are successful. And बाकी चोट लगता है तो क्या क्या होता है, कितना नुकसान होता है, कितना साइकोलॉजिकल लॉस होता है, कितना प्रोडक्शन लॉस होता है, और जिसको चोट लगा या जिसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुआ, उनका परिवार में क्या गुजरता है, दैट वी ऑल अंडरस्टैंड नाउ। माने वी हैव कम फ्रॉम स्टेज वेयर भैया आज पसीना बहा के शर्ट निचोड़ के पानी निकाला तो अच्छा काम किया से we have come to the smart working stage. Those olden days of open earth furnaces or twin earth furnaces have gone. Now we are into converter process. So here the pace is a bit faster than, much more faster than, not bit faster than, much more faster than the previous ones. So we have to develop our own thought process regarding safety in the same way. So the handling of metal or liquid metal has increased. So we have to think in that way. And ट्रांसफॉर्मिंग सेफ्टी कल्चर करके जो लिए हैं,
इसमें पहले वर्ड यह है कि सेफ्टी को अपना कल्चर बनाना है, उसको अपने कल्चर में इनकलकेट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं पहले बोला सर को देख के हेलमेट पहने, वो नहीं है। हेलमेट क्यों पहनना है समझ गया तो हेलमेट पहन के ही रहे। सो this last few years has brought at least this change, that we are trying to think that safety is an integral part of our work and our culture. So how to take forward it? हमने कंसल्टेंट को लगाया, सबको लगाया, लेकिन last year we have faced many problems. This year also we are facing. Why? Because कंसल्टेंट को लगाने से काम खत्म नहीं हो। वो जो बोल रहा है उसको हम समझ के उसको अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने का कार्यक्रम हमारा है, उनका नहीं है। He will only tell us how to come out of it or how to develop ourselves to meet those requirements. So, in this, ये जो प्रयास किया गया सभी 6 टीमों से, माने जो फाइनलिस्ट हुए हैं, और बाकी लोग भी बहुत मेहनत किए हैं, most probably might others might have missed by a whisker or something like that. But thanks to the efforts put by all, that means it brings really a thought process जो चल रहा है कि हमको हर चीज में आगे बढ़ना है। नॉट ओनली वी प्रोड्यूस टीम, वी प्रोड्यूस सेफ टीम। इस तरीके की सोच में जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ये जो टीम्स फाइनल में पहुंचे इनका प्रेजेंटेशन सुनेंगे अभी लोग, और उनका थॉट प्रोसेस क्या है। तो थैंक्स टू ऑल EDs who have taken out their time for joining. It clearly indicates that how much importance we are giving to this. Uh, so let us hear them, Sir, and ठीक है, okay, thank you. Thank you, thank sir. you. Thank you very much, sir, for your valuable guidance and clearly outlining the expectation for today's session. And so your perspective provides a very strong foundation for the discussion for today's, and it also reinforces the importance of strengthening the safety cultures across sales. Thank you, sir. We will now proceed with the presentation with all the 6 teams that we have over here, who have worked very extensively to analyze the current practices, identify the gaps, and also propose the actionable strategies in a very realistic terms also. So the sequence of the presentations will be first, sequence of the program will be that we'll be hearing all the teams for 10 minutes each. 10 team has been given, each team has been given 10 minutes to present their insights and their recommendation. After that, we have also 15 minutes of time for the open discussion, where we request our senior leadership to have a more deliberation how to take this more actionable form after the teams are present. So we'll start with the team one. Team one, we have 6 teams over here, sir. I will just share in a minute also just from my end of the 6 topics that we have so that we can bring a coherence to it. So these are the 6 areas or the 6 strategic pillars that the teams have identified. One is driving behavioral change and cultivating a safety first mindset. Second is leveraging digital tools for real-time safety monitoring. Third is empowering workforce through trainings, awareness, and skill growth. Fourth is strengthening contractor safety management practices and also ensuring the asset integrity. Fifth topic is enhance safety governance and strengthen the accountability. That is the monitoring aspect. And the sixth topic is demonstrate the leadership commitment to the visible felt leadership. So these are the 6 topics or the 6 teams will be presenting on these themes. I will stop sharing from my end and I will request the first team to please come forward. A very good morning to all the respected EDs, CGMs and my seniors. I am Rohit Kumar Rajak from Colevis Division, शासनगर धनबाद। सर मेरे लैपटॉप में कुछ इशू आ गया था सर, तो मैं राहुल सर के आईडी से ही अपना प्रेजेंटेशन दूंगा सर। एम आई ऑडिबल सर? Yes, you are audible. Perfectly fine.
रोहित। तो टू स्टार्ट विथ सर, हमें अपने वर्कशॉप के दौरान 6 स्ट्रेटेजिक पिलर्स दिए गए थे, और हमारा टीम फर्स्ट जो पिलर था ड्राइव, दैट इज टू ड्राइव बिहेवियरल चेंज एंड कल्टिवेट अ सेफ्टी फर्स्ट माइंडसेट, हम इस पे फोकस करेंगे। तो सर हमारे टीम में 3 मेंबर्स हैं, अविनाश सर, डॉक्टर देवेंद्र मुखर्जी सर और माई सर रोहित कुमार सर। अनफॉर्चुनेटली दे couldn't join the meeting. They are on leave, sir. तो मैं presentation दूंगा on behalf of my team. सर तो Dibyendu इस sir is also there. ओके डी सर, सर तो सर इस पे ड्राइव में हम लोगों ने सर फोकस किया है टू मेनली बिहेवियरल चेंजेस और एक सेफ्टी फर्स्ट माइंडसेट को कल्टीवेट करने के लिए। तो सर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन ऐसा है कि हमने अपने प्रेजेंटेशन को शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और हर शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने की इश्यूज को आइडेंटिफाई किया, उसके करस्पॉन्डिंग कंसोलिडेटेड रिकमेंडेशंस और एक एक्शन प्लान दिए हैं, और एक केपीआईस को कैसे मॉनिटर करें इसको। तो ये हम लोगों ने किया है सर। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से। तो सर इसमें सबसे पहला हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है, पहला इशू है कि कॉम्प्लिसेंसी लीडिंग टू अनसेफ शॉर्टकट्स स्पेशली इन हाई रिस्क। तो एक्चुअली सर होता ये है कि कुछ लोग इतने एक्सपीरियंस लोग एक्चुअली काम करते करते इतने कंफर्टेबल और कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि वो अपने अपने काम से एसोसिएटेड हजार्ड्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, भूलना स्टार्ट कर देते हैं सर। उसके लिए हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया था कि हम लोग एक सुरक्षा मित्र प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। सुरक्षा मित्र सर हम लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को जो जो कि बहुत विजिलेंट रहता है और जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसको हम सुरक्षा मित्र बनाएंगे, और उसे हम अथॉरिटी देंगे कि वो अपने पीयर्स को और अपने आसपास के एम्प्लॉयज को रोक टोक कर सके, वो बता सके कि क्या गलत है, क्या कहाँ लैप्स हो रहा है। तो सर हम लोगों ने प्रपोज किया था कि 20% कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को हम लोग सुरक्षा मित्र बनाएंगे, और इसका और ये हर वीक एंड में भी एक सेशंस ऑर्गेनाइज करेगा, जिसमें वो बताएगा कि ये पर्सन ये गलती कर रहा है, ये पर्सन को ये नहीं करना चाहिए। तो सर इसका केपीआई ऑफ मॉनिटरिंग हम लोग रखें कि कितने अनसेफ एक्ट्स उसने आइडेंटिफाई किए हैं, और कितने वीकली डिस्कशंस वो कर रहा है। तो ये हम लोग ने मॉनिटरिंग के लिए रखा है। हमारा अगला इशू है सर गैप्स इन इंसिडेंट लर्निंग एंड नियर मिस रिपोर्टिंग। तो नियर मिस अंडर रिपोर्टिंग सर, एक्चुअली एक ही अगर नेचर ऑफ एक्सीडेंट्स बार बार अगर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट्स से हम कोई भी एक्सीडेंट से हम सीख नहीं रहे हैं, और इसका एक मेजर रीजन है कि जो नियर मिस रिपोर्टिंग है वो उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। तो सर इसके लिए बहुत सारे प्लांट्स में काम किए गए हैं, कर रहे हैं, जैसे कि सब कॉमन पोर्टल होता है जहाँ पर नियर मिस रिपोर्टिंग करते हैं, बट ये सारे जगह अभी सारे प्लांट या सारे यूनिट्स में नहीं हो रहा है। तो सर हम लोग ने वही सजेस्ट किया था कि इसको एक्सटेंसिवली सारे जगह लॉन्च किया जाए, और हम कोई और अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर व्हाट्सएप में हम लोग नियर मिस रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या एक डेडिकेटेड फोन नंबर जिसको सेफ्टी फोन नंबर बोल सकते हैं, उसमें हम नियर मिस रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसका केपी ऑफ मॉनिटरिंग हम लोग ने रखा सर कि कितने नियर मिस रिपोर्टिंग हो रहे हैं, और कितने लोग हैं जो फ्रिक्वेंटली नियर मिस को रिपोर्ट कर रहे हैं। सर मीडियम टर्म गोल्स में हम लोग ने 3 इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें पहला इश्यूज है सेफ्टी सर्कल स्कीम स्ट्रेंथनिंग टू इम्प्रूव हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन बाय एम्प्लॉयज। सेफ्टी सर्कल स्कीम तो सर चल रहा है प्लांट्स वगैरह में, बट ये इसको सर और ज़्यादा बढ़ाना है, सेफ्टी सर्कल टीम्स को और बढ़ाना है, मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेट करवाना है सर, तभी जाकर अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हम सर सजेस्टेड एक्शंस में ये रखें कि हम टारगेट्स देंगे हर डिपार्टमेंट को कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है कि वो सेफ्टी सर्कल में इन्वॉल्व होने चाहिए, और इसका केपी ऑफ मॉनिटरिंग हम लोग ने ये रखा है कि कितने सेफ्टी सर्कल टीम्स बन रहे हैं हर 6 मंथ्स में। और सर इसमें ये कोशिश करना है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को भी ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, ताकि क्योंकि मेन शॉप फ्लोर में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। अगला की इशू है सर इनकंसिस्टेंट सेफ्टी ओनरशिप अमंग एम्प्लॉयज एट शॉप फ्लोर लेवल। सर होता एक्चुअली ये है कि सेफ्टी को का ओनरशिप सर बहुत वेग हो जाता है,
सबऑर्डिनेट्स सोचते हैं कि वो सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर सोचते हैं कि सबऑर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर इसके लिए हम एक सेफ्टी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। और हम मेनली फोकस करेंगे मिडिल मैनेजमेंट, फ्रंटलाइन मैनेजर और हमारे जो शॉप फ्लोर में जो सुपरवाइजर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स रहते हैं उनको। तो एक टू टायर ट्रेनिंग मॉड्यूल हम लोग बना सकते हैं ऑपरेशंस के लिए, मिडिल मैनेजमेंट और लाइन मैनेजर्स को के लिए अलग, और शॉप फ्लोर में सर सुपरवाइजर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए अलग। और इसे केपीएफ मॉनिटरिंग रहेगा कि कितने परसेंट लोग ट्रेनिंग इन्वॉल्व हैं और कितने लोग वो काम एक्चुअली कितना हमारा वो काम हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। अगला सर हमारा मीडियम टर्म में इश्यूज है कि एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल सेफ्टी ट्रैकिंग परफॉर्मेंस। तो कोई इंडिविजुअल सेफ्टी के मामले में कैसा कर रहा है, तो इसको ट्रैक करने के लिए अभी हमारे पास कुछ है नहीं सर। जैसे कि हम फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल हेल्थ ट्रैक करने के लिए हमारे पास सिविल स्कोर रहता है। सर उसी तरह अगर हम कोई इंडिविजुअल सेफ्टी कितना सेफ्टी कॉन्शियस है, इसको ट्रैक करने के लिए हम सेफ्टी क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं सर। तो उसमें क्या है सर, अगर कोई किसी से सेफ्टी लैप्स हो रहा है किसी इंडिविजुअल से, तो वो उसका सेफ्टी क्रेडिट स्कोर घटता रहेगा। अगर किसी को अपना सेफ्टी क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये थ्रू आउट द कैरियर वेरी करेगा, हमको एक बेस सेफ्टी स्कोर ले सकते हैं और वहाँ से ये वेरी करेगा, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसका केपी ऑफ मॉनिटरिंग सर ये रहेगा कि कितने परसेंटेज एम्प्लॉयज है जो कि जिसका हेल्दी सेफ्टी स्कोर है, और एंड ओवर द टाइम कितना एवरेज अच्छा बढ़ रहा है सेफ्टी स्कोर किसी का। लॉन्ग टर्म इश्यूज में सर हमने दो इश्यूज आइडेंटिफाई किए। पहला है फ्रेगमेंटेड एंड रिएक्टिव सेफ्टी कल्चर। तो सर हमारा जो सेफ्टी कल्चर है वो अभी रिएक्टिव है सर। हम मेनली लैग इंडिकेटर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हमें उसको प्रोएक्टिव करने के लिए लीड इंडिकेटर्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा सर। ऐसे ऐसे चीज जो कि एक पोटेंशियल हजार्ड बन सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना कर सकते हैं सर। इसका एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा सर। आर्सिलर मित्तल के थ्रू से आर्सिलर मित्तल एक प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट कल्चर पे शिफ्ट हो गया है। मतलब वहां पर लोग लीड इंडिकेटर्स फाइंड करते हैं और उसको उन्होंने अपने केपीआई से लिंक कर दिया, अप्रेजल से लिंक कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स मिलता है। अगर हम भी सर ऐसा कुछ अगर कर सकते हैं कि लीड इंडिकेटर्स पे ध्यान दे, हजार पहले ही आइडेंटिफाई कर ले, तो इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। तो इसमें सर हम लोग वही केपीआर मॉनिटरिंग में रखा है कि कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, लीड इंडिकेटर्स फाइंड करना, कितने लीड इंडिकेटर्स फाइंड किए हैं, और एक इसको हम रिवार्ड मोटिवेशनल रिवार्ड सिस्टम से भी हम लोग जोड़ सकते हैं। अगला सर हमारा इशू है क्रॉस प्लांट लर्निंग गैप्स हिंडरिंग माइंडसेट यूनिफॉर्मिटी। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं, तो अगर हम जैसे एक कॉमन रिपोजिटरी रखे जहाँ पर हमें इंसिडेंट्स के बारे में, एसओपीज के बारे में पता चले। आई थिंक सर एसएसओ इसमें काम कर रही है अभी। तो आई थिंक एसएसओ ने ये लॉन्च भी किया है, एक पोर्टल लॉन्च होने वाला है जहाँ पर सारे एसओपी से एक साथ मिलेंगे। तो सर उसी मतलब वही उसी से रिलेटेड है कि एक कॉमन रिपोजिटरी रहे जहाँ सारे इंसिडेंट्स और एसओपीज के बारे में रहे और हमें वहाँ से नॉलेज मिल जाए। और अगर हम सर वर्चुअल फोरम्स या कोई वेबिनार्स या वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें जहाँ सारे प्लांट्स के लोग एक साथ आकर डिस्कस करें, एक्सीडेंट्स को डिस्कस करें, क्या हम मेजर्स ले सकते हैं सर क्या उसको रोकने के लिए। तो और इसका सर केपी ऑफ मॉनिटरिंग हम लोग ने रखा है कि कितना डॉक्यूमेंट्स एक्सेस हो रहे हैं पर मंथ थ्रू दैट पोर्टल, कितने लोग वर्कशॉप्स या वेबिनार्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितना हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। Thank you. Thank you, the team comprising of Avinash Dubey from Bilai. Thank you, Dr. Devendra Mukherjee, and thank you, Rohit, for your presentation. We'll now move to the second team of Abhishek Kumar, Jyotirmay Rathia, and Sonu Kumar Gupta. Is my slide visible? Yes, it is. It's Yeah. full screen is visible. Good morning to everyone, respected ED sirs and senior leadership of SAIL.
I, Abhishek Kumar, on behalf of Team 2, is presenting on the topic leverage digital tools for real-time monitoring, safety monitoring. Actually, this is a most important vertical of all the six pillars which Rajesh has earlier discussed. Because if you don't have a digital infrastructure, none of the verticals will be effectively monitored, and based on the insights, we can't make decisions. So, our basic idea was to have a digital technology to prevent incidents before they actually happen and create a connected, intelligent, and proactive safety ecosystem in SAIL. To do that, we need to identify the problems. We don't have a digital infrastructure which cater specifically to the ground workforce or to the mid-level managers and to the top leadership. Because what ground workforce requires is real-time guidance, visual alerts, trainings, and easy reporting. Mid-level managers need monitoring dashboards, audit tools, and compliance tracking. Our top leadership needs integrated data, uh, analytics-based insights, and decision-making support system. So we have categorized our digital ecosystem into three different parts. One will take care of the ground workforce, second will take care of the mid-level managers, and the third one will take care of the top leadership requirement. So based on the different aspects, we have categorized all the suggestions into three different aspects. That is a short term, mid term, and long term. Our short term includes the central dashboard, which I will be discussing. We are developing at centrally at SSO. EPTW, permit to work in the digitalized format. Then the third one is digitalized form of SOP and SMP, which my earlier teammate was also talking about. AR/VR training module, video analytics, AI built DFMs. I will discuss in detail in my coming slides, so I will skip this one. Coming to the short-term goals, this is a central dashboard for safety, which at SSO level we are in the advanced stage. Shortly, we will be launching this portal. This portal will solve all the plants and units problem, because most of the small units doesn't have a dashboard where they can log in near miss incidents. They can do analysis of the incidents and keep records. So this will help all the plants and units. They will have a unified system of analyzing all the incidents, and real-time tracking can also be seen over here. So it is in a very advanced stage. Shortly, we will be launching this portal with all the plants and units. Second is the EPTW, e-permit to work system, because we have seen that the paperwork which we are right now we are following through our plants and units, that is very cumbersome, and quite often it is being violated also, because the concerned person is not available sometime. That person doesn't know also about that so and so work is going on in his area. So this digital form of PTW will help solve that problem, and the departmental HODs or the concerned people will be able to track which all activities are going in their department or which are in their battery limit. So this is the most essential part which I feel that we can start building upon it, and it will definitely help us in the future to minimize the incidents. The second form, digitalized form of SOP and SMP, we are also working at our SSO level with the help of SDDT, and we have collected all the SOPs and SMPs from the plants and units, and it has been given in the cloud. And a chatbot which is in the development stage and testing is going on. Some of the plants might be knowing about, like Bocaro and ISP. They have been some users have been given the access, and they can check whether that chatbot how that is behaving, and we can improvise upon it. So this is in the testing stage. Third is the safety performance indicator, which I strongly believe that there should be a competitive environment among the departments across the plants. Like Swasya, when it was working in the Bhilai steel plant, they had a very good system of comparing all the departments' scores. Although the scores were based on the different standards and their implementation part, but we can go further upon it, and we can identify the lag indicators like number of fatalities, LTIs, first aid cases,
lead indicators like near miss and all safety walk, and the top 10 performing departments can be identified in the within a plant. And if we go on expanding this horizon, we can have a sale pan sale comparison also. This will create a good environment and a competitive sort of thing, that so and so department of Bhilai Steel Plant or ISP are doing well, we can also compete among them. So this will give a broader picture to the our top leadership. They can pinpoint which are the areas they need to work upon it. So this I have taken it from the Tata Steel. They are rigorously following this particular safety performance index dashboard, and at board level they are discussing about each and every departments who are lagging behind in the safety front. This is being taken from the Rourkela Steel Plant. They have a AR/VR training module, and they can actually test how precisely they are doing the things at the training center itself before they are actually deployed at the work site. So this is also one of the most vital aspects of training, where people can be trained in the HRD centers and before they are deployed at the real world. This is the intelligent video analytics. We all plants and units are having process-based cameras, and using those process-based cameras and connecting those cameras with the intelligent video analytics, we can pinpoint which are the unsafe activities which are going across the plants, across the departments, and the HODs will have a real-time update about what things are going wrong in their shop floor. So like the image which is being shown over here, that people or green is indicates that they are wearing the helmets, they are using the hand gloves, and this is just a prototype, and we can build upon this, and later on it can be mapped with the mobile number as well as the identification card also of the particular employee, so that at real time basis the HOD and the shop owners, they will have a more update about things going wrong in their shop. Instead of monitoring across the cameras, they will have a live update about anything going wrong in their shop. This is a AI-built DFMS driver fatigue monitoring system in EOT cranes. In mines and all, the HEMM vehicles are equipped with this system because it is mandatory, because DGMS has a strict guideline that all HEMM vehicles must be having this DFMS system. We can build upon that system, and we can introduce this DFMS system across the EOT crane, particularly the hot metal cranes, which are carrying hot metals and steel across the SMS area. So we can identify those vital cranes where we actually require those kind of system, because the person who is operating those cranes, they are working in a very tough environment, and it takes a toll on their body also. So this monitoring will help them, help the shop owners as well as the people to know about how that crane operator is behaving across the his shift. This is a very all of us are using the AI chatbot, chat GPT and all. So it is a very simple thing to use. We have our chat GPT installed in our mobile cameras. Just you just need to go across any site, just take a picture and ask that chat GPT or whatever AI you are using, that identify the unsafe things which are prevailing in this picture, and it will give you a list of things which can be improved in that site area. So you don't need anything else, just your camera and your chat GPT installed in your application. That thing will solve. And in Tata, they are having a more advanced safety lens app based system. But to start with, we can just use our chat GPT, and we can find out what all things are wrongly placed or wrongly positioned. Coming to our the midterm goals, what we feel that there should be a digital safety command center for each plant. Like all plants are having a plant control unit where they monitor the production centrally.
So like that, we propose to have a digital safety command center where all those process-based cameras as well as the video analytics feed will be coming over there. Two people will be there monitoring those systems, what things are going wrong, and they can correct then and there. Instead of waiting somebody to pinpoint that that thing went wrong, we will have a command center where people will real time they will track the safety system which are there in the plants. So this will effectively improve our safety systems in plants. This is the AI-based chatbot. Two things I am shown. One is from our SSO portal, where I have just given a prompt of giving the electrical PP and its uses. So it has given me about different up to 650 volt electrical jobs, what things can be used, and above 650 electrical jobs, what can be used. So this is already integrated in our SSO portal. Everybody can go and check. And the second right side picture shows about the SDTT. They have been working over the chatbot model, and like I earlier I was telling about that it is in the testing phase. And some people have been given the access about it, and they are rigorously checking this system. And shortly this will be deployed also, and everybody will be able to use like this. I have given a prompt like give you the SOP of any operation. So it will search all the SOPs which are there in his directory, and it will give you a relevant solution along with the reference also. Third is the safety scorecard of the individual. Like my earlier teammate was also talking about the safety credit score. So this is also a similar sort of system which will be provided, and individuals will be given a safety score based on their performance in the workplace. These are technological interventions for the conveyor guards. We have lots of accidents across the conveyors, particularly in the head end and tail end of the pulley. What we propose that we can barricade the entire length of the conveyors, and interlock to be provided so that somebody removes the barrier and to work upon it. And unless and until that person puts back the barrier in that place, the conveyor won't start. So this is a very small digital initiative which can be implemented. To start with, we can have that thing across the head and tail of the pulley, because our conveyors are not guarded entirely. So just to give a thought, we can start with the head and tail end of the pulley at least. This is a RFID based barriers where you will have an access based on the cards. If somebody wants to enter a particular area, if he doesn't have that access in that particular hazardous area, that person won't be allowed to enter inside that premises. This is the smart wearables. There is a small video which was presented over there in the digital conclave in Bokaro Steel Plant, from where we have taken. Just I will request you to just have a little bit of patience and go through this video. In steel plants, protection must be intelligent. Working near furnaces, cranes, and confined zones means space shouldn't just protect, it should respond. That's the promise of smart wearables. Today's helmets, vests, and wristbands can detect fatigue, gas exposure, heat stress, and faults. Send live alerts to control rooms. Guide workers away from danger. With Smart Pay, steel plants gain faster emergency response, live location tracking of every worker, health data to predict fatigue or overload. Whether it's a crane operator at height or a technician inside a gas prone pit, Smart Pay turns every worker into part of a connected safety. In steel plants, this is another safety leadership experience center which JSW and Tata Steel are having. We can also have such sort of thing where we can provide height fall or confined space working, and we can have an experience center like people who are coming to our plant, they will experience what all hazards are there inside the plant, and they will have a real time feel of what is actually there inside the plant before actually going inside. And there is a small YouTube video also. I will not go through that one, but I will request a participant can go through this one.
For the long-term goal, I will request Sonu to take over from this slides to the end. Over to Sonu. Thank you, sir. Good morning, sir. Next slide, sir, please. So in long term, first one is a connected workforce. So in connected workforce, every employee from the shop floor to field operation will be integrated through a smart device and wearables, so that real-time communication, live location tracking, and instant safety alerts will empower employee to act quickly during emergency. We will create a proactive safety culture where technology connects people, process, and protection seamlessly. Next slide, sir, please. Our next proposed is digital twin for critical installation. We propose to introduce digital twin for all critical installation across all plant of sale. This virtual replica of physical asset will enable us to monitor equipment health, simulate risk scenario, and predict failure before they happen. By bridging the physical and digital world, we move toward predictive safety management, where incident can be prevented rather than they merely responded to. So next slide. Auto coupling and decoupling for wagons. To minimize intervention of high-risk rail operation, we envision implementing automated coupling and decoupling system for wagons. This technology will drastically reduce human exposure to mechanical hazard, improve efficiency, and ensure safer material handling. This is the video of auto coupling and decoupling. Next, robotic system for hazardous tasks. We will deploy robotic system for hazardous and repetitive operation such as hot metal handling, slag removal, and confined space cleaning. A robot will take over tasks that pose serious risks to human health and safety, ensuring precision, consistency, and protection of life. This is the video of robotic system. Thank you, sir. That's all from team 2. So thank you, Team 2, comprising of Abhishek, Jyotimer Rathia, and Sonu. Thank you for very well presenting and collating the best practices across the industry and sharing your recommendations to everyone. We'll now move forward to the Team 3, comprising of Darshan Singh from Durgapur, Stephen Josh from Bhilai, and Rahul Kumar Singh from Collieries. Good morning, Rajesh sir. Good morning, Rahul Stephen. sir will be sharing the screen, Yeah. and all three of us are present here Yeah, nice in to the see team. you also can join. Okay, so shall we begin? Yeah, you can. Your team can begin. Yeah. Okay. So good morning, everyone, respected seniors, colleagues. Uh, Today, we are representing Team 3, which will be talking about empower your workforce. So this topic will primarily focus on non-executives and contractual work. We are not currently providing any suggestion for the executives in this particular pillar 3. Next slide, please. So our agenda will be in 4 parts. First is the key issues, which where we'll highlight the hindrances in empowering our workforce, basically which stops us from achieving that efficiency in focusing on safety and other issues. Second will be the recommendations part, where we have induced the systems thinking idea to basically develop the culture part and not Stephen, just the technical so, issues. sorry to interrupt. We have got a request कि थोड़ा हिंदी भी use कर सके तो if you can try, हाँ that will be हाँ helpful. ठीक
ठीक है सर। इसमें बेसिकली सिस्टम थिंकिंग का पार्ट हमने रखा है, जिसमें 3 डिविजन्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला रहेगा टेक्निकल, विच विल फोकस ऑन दी की कॉम्पिटेंसीज। थर्ड विल बी बिहेवियर पार्ट रहेगा, जिसमें हम एक कल्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फोर्थ विल बी करियर पाथिंग, कि ये सब इनकलकेट करते हुए हम कैसे एक लैडर को हम आगे बढ़े एज अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। देन फॉलोड बाय सजेशंस, जहाँ पे हमने एक टाइमलाइन दिया है फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन के लिए। हर टाइमलाइन में हमने कुछ कुछ एक्शंस सजेस्ट किए हैं, एंड उन एक्शंस को कौन लीड करेगा एज डिपार्टमेंट अक्रॉस सेल, वो हमने बाइफरकेट किए हुए हैं। एंड फाइनली द फोर्थ विल बी केपीआईज। ये केपीआईज विल हेल्प अस मेजर बेसिकली द अचीवमेंट्स विच वी आर हैविंग बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑल दीज एक्शंस। एंड ये हमको एक बेंचमार्क सेट करने में भी हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई where each division of sales stands, and together it can come as a safe sale holistically. So I'll request team members to take it further. Okay. Good morning, everyone. I'm Rahul from Colliery Division. So we have identified the key issues. Uh, the first one is a clear skill gap. सर, दिखता है कि जो ज़रूरत है हम लोगों को काम में, बहुत बार वो स्किल नहीं होता है, तो उसको टैकल करने के लिए सर टारगेटेड ट्रेनिंग और अपस्किलिंग का प्रोसेस कंटिन्यूअस वो करने का ज़रूरत लगा हम लोगों को। सेकेंड इज सर कि इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो अलाइनमेंट कम है, तो वी नीड टू अलाइन द आर वोकेशनल ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। थर्ड वन इज सर जो सेफ्टी अवेयरनेस और बिहेवियरल गैप्स है, ये काफ़ी देखा गया हमारे वर्कफोर्स में, और वी नीड मोर इमर्सिव एंड रिकरेंट मेथड्स टू एड्रेस दिस इशू। फोर्थ इशू जो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए वो है सर ट्रेनिंग का जो डिलीवरी है इट्स वेरी फ्रैगमेंटेड। क्लासरूम में ही पढ़ाया जाता है, कभी कभार एडॉक रिफ्रेशर्स होता है, ऑन द जॉब असेसमेंट और इंटीग्रेशन दैट इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड। द फोर्थ इशू दैट वी आइडेंटिफाइड was that जो ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो और जो बिजनेस का जो आउटकम है इन द बिजनेस विच वी आर, तो इन दोनों के बीच में एक मेजरेबल लिंक नहीं है, ना के बराबर, इट्स वेरी वीक। तो उसको अगर हम लोग ट्रेनिंग को प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, एट्रिशन इन सब से जोड़ पाए, मेजर कर पाए, दैट विल बी एन इशू। एंड द fourth one that we found out that फोर्थ वन दैट वी फाउंड आउट वाज दैट ट्रेनिंग शेड्यूल्स बनाए जाते हैं, देन वो डिसरप्ट हो जाते हैं बिकॉज डिपार्टमेंट से बहुत बार लोग रिलीज ही नहीं हो पाते हैं टू अटेंड दोज ट्रेनिंग्स। So after that, we came up with our consolidated recommendations, जिसमें हम प्रपोज कर रहे हैं कि एक सिस्टम थिंकिंग अप्रोच से हम लोग इसको डील करेंगे, विच विल कंप्राइज ऑफ टेक्निकल एंड सेफ्टी स्किल्स, बिहेवियरल अवेयरनेस और कैरियर पाथिंग भी अगर हम क्लियरली डेमोस्ट्रेट कर पाए, तो इफ यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन अ सिस्टम थिंकिंग वे, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। और सर टेक्निकल और सेफ्टी स्किल्स में सर पहला हमारा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको सीसीबीसी, आरपीएल और जो एलिड कोर्सेस हैं उनके थ्रू ही लेना मैंडेटरी कर दिया जाए, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जब भी हमारे प्लांट में, हमारे प्रेमाइसेस में एंटर करेगा, तो इट शुड बी द बेंचमार्क जो इसके गुजर के ही आना चाहिए, और उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए कि जो उसको आरपीएल या सीसीबीसी के थ्रू जब वो आया है, तो वेदर ही इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट और नॉट। ट्रेनिंग में सर आजकल सिमुलेशन का, एआर वीआर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको हम लोगों अलग अलग प्लांट्स में है ये, बट इसको एक कंसोलिडेटेड तरीके से इसको इस्तेमाल करने का ज़रूरत है। ये हमारा एक रिकमेंडेशन है। कहीं पर किसी प्लांट में किस चीज़ों का एआर वीआर है, मॉड्यूल कहीं कुछ और है, तो उसको कंसोलिडेट करके इफ यू कैन कम अप विद समथिंग लाइक दैट।
थर्ड है सर कि जिसको जिस चीज का जरूरत है तो हम उसको वही टारगेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। वी कैन और देखें कि जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन पर रिफ्लेक्ट करता हुआ वर्कशॉप हम अपने वर्कफोर्स के लिए करवाएं। ई लर्निंग मॉड्यूल्स हम लोग जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में वो समझने में उनको आसानी हो, तो इस तरह का मोबाइल ऐप्स बनाकर छोटा छोटा ई लर्निंग मॉड्यूल्स डेवलप करें, सो दैट वो जहाँ भी उनको समय लगे मिले वो अपना ट्रेनिंग एक्सेस कर सकते हैं। बिहेवियरल अवेयरनेस के लिए हमारा जो सजेशन रिकमेंडेशन है वो ये है सर कि वी शुड हैव समथिंग लाइक सेल सेफ्टी एंड स्किल एकेडमी, जो आइदर वो सेंट्रली हो सकता है या फिर एसएसओ के थ्रू वो मॉनिटर होगा और हर प्लांट में हर डिपार्टमेंट में उसका एक्सेस रहे। द थर्ड वन इज कैरियर पाथिंग। तो जो कॉम्पिटेंसी है सर, वी कैन मेक इट टीयर्ड, कि मान लीजिए वेल्डिंग का ही है तो समवन कैन बी अ टीयर वन वेल्डर, समवन कैन बी अ टीयर टू, टीयर थ्री, बेस्ड ऑन कि उसका कॉम्पिटेंसी कितना डेवलप हो गया है। तो यू कैन टैकल टफ जॉब्स जिसमें ज़्यादा सेफ्टी से अप्रोच करने का ज़रूरत है। और सर ये जो ट्रैकिंग, इस प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए सर मेजरेबल लिंक्स जो केपीआईज हम लोगों का आगे हम लोग बताने वाले हैं, तो उसके थ्रू कैरियर पाथिंग के में भी मदद मिलेगी। नाउ आई रिक्वेस्ट दर्शन सर टू प्लीज ज्वाइन। Good afternoon, everyone. Let's start now. That now we have to track the progress, and we have made a timeline that how we can implement these suggestions. Like phase one, we will go for the first. We will go for the competency mapping across all units. Then we will go to develop the central that Abhishek team was talking about. The training portal will be developing the dashboard, and then we have already, there are many trainers in the plants. Then we should utilize all the trainers, then not only in their department, they can also go for other department, other plants, and those who are good trainers can be utilized across the sale also, that for the safety training also. एंड दूसरी फेज में हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का जो आरपीएल ऑलरेडी चल रहा है, सीसीबीसी जो है उसके थ्रू मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को हम लोग आरपीएल के थ्रू उसको सर्टिफिकेट दें, सीसीबीसी के थ्रू उसको ट्रेनिंग दें, जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, परमानेंट एम्प्लॉय जो भी हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और आगे फिर हम लोग का जो सेल सेफ्टी एकेडमी जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, उसको हम लोग किसी से टाई अप भी कर सकते हैं, जैसे एनडीसी से, जेएनवीटीआई से, लाइक जेएसडब्ल्यू हैज आल्सो मेड सेफ्टी एक्सपीरियंस सेंटर, वी कैन आल्सो थिंक इन दैट लाइन आल्सो। And similarly, we can also go for the AR/VR that earlier team was talking about. AR/VR training should be also given to the non-executive and contextual employees, so that we can know how he can perform in the job, on the job training. And in the phase third, when we will move from the 24 to 48 month, then we will be going for the job distribution and integrate in the micro learning module. Like we can make simple module and we can circulate the module through WhatsApp. And WhatsApp module, they can learn very good because everybody using mobile phone. And if we send the training module in the mobile WhatsApp circulation, then even non-executive and contextual employee will go for the 10 second, 2 minute video he can see. And safety is like, if he is going to the job, just forwarded 1 2 minute video, so he will see the video and he will learn what are the hazard in the area and what kind of incident can happen in that area. And this will be remain in his mind because he has seen in his mobile, and it will be very effective. And similarly, we can go for the academic partnership, like we skill academy and annual safety culture competency audit we already doing. And in the phase four, we can go for the benchmark safety competency model, like टाटा का एसएलडीसी है, वैसे पोस्को ने टीएल बनाया, हम लोग भी इस टाइप का अपना सेल का स्किल एकेडमी बना सकते हैं, उसका रिस्क एनालिसिस और प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट करेंगे। सो next slide. And last, we have to KPI, we have to track the progress. So in this we have some suggestions, like first we have to make a target that we have to roll map for 100% of the critical load. This is the target, we have to map each and every individual. And then we have to training per employee, there is a target of 40 hours per employee training per year.
and we can also have direct and contractual certified for role certificate, and then we can also track the training effectiveness. What we are providing the training, is that effective? Then that we have to also track through target based, should be tracking, should be also there. Like if that training is more than 80% effective, then that is a good training. Otherwise, we have to change the training. Otherwise, we have to change the trainer. We have to take decision on the line. Similarly, behavior indicator also. If person has taken the training, if he is performing correct in the job or not, he need retraining. He need represet training. So we can also follow up in that progress, that he is performing well or not. If he is not performing, then we can retrain him, give represent him, and at last we have to trace the outcome. What kind of outcome? First, past quality improvement. There must be some quality improvement, and there must be some safety incident must be reduced. If it is not reduced, then we have to change. We have to regroup and replan again. And this training, this KPI tracking will help us to improve further in a daily basis and further. That's all from my team. I think. Thank you. Last slide. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Team 3. We'll now move to Team 4, comprising of Anirudh Devakar from Bokaro, Ashok Chaudhary from SSO, and Rita Murmu from Rourkela. अशोक, are you muted? अनम्यूट कीजिए। अशोक अनम्यूट कर लीजिए। अशोक या रीता मैम, कौन बोल रहे हैं? फुल स्क्रीन विजिबल है आपका? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड आ गया, अनम्यूट कर लीजिए। Good morning, everyone. We Team 4 are here to present our initiative under the strategic pillar Strengthen CSM Practices and Ensure Asset Integrity. इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम चैलेंजेस देखेंगे इन आवर करंट CSM, जिसमें हमने देखा कि करंट कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी लैंडस्केप में हमने ये देखा कि बहुत सारे ऑपरेशनल बिहेवियरल चैलेंजेस हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इसीलिए है क्योंकि उनको डर है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स प्री क्वालिफिकेशन ऑल्सो रिक्वायर स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद ही जनरली उनको उनका क्वालिफिकेशंस बाकी चेक करते हैं, बट हमें प्री क्वालिफिकेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, एज सेफ्टी कॉम्पिटेंस इज नॉट ऑलवेज इवेल्युएटेड बिफोर अवॉर्डिंग द वर्क। हमने गैप्स पाए सेफ्टी ट्रेनिंग एंड इंडक्शन में, स्पेशली फॉर न्यू एंड हाई रिस्क वर्कर्स के लिए, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंट अवेयरनेस ऑन साइट है। एंड ऑल्दो प्रोसीजर एग्जिस्ट करते हैं, बट देयर इज अ कंसिस्टेंट execution remain a concern, with a deviation still observed during routine activities. Monitoring and supervision are also not yet fully effective. Despite having IT tools and wearables, adoption and utilization still remains limited. And importantly, without a strong and structured reward and consequent culture, motivation for sustained safety behavior does not always persist. तो इसके लिए हम रिकमेंड करेंगे सबसे पहले ट्रेनिंग, जिसमें हम फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम एक डेवलप करें कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग सेंटर अक्रॉस प्लांट, ताकि हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनको दे सके, जितने भी अनस्किल्ड स्किल्ड सुपरवाइजर विथ इन कोलैबोरेशन विथ एक्सपर्ट ट्रेनिंग पार्टनर्स। इस केस में हम सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को एक्सपर्ट ट्रेनिंग पार्टनर्स की तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं। Along with this, we have to conduct targeted workshop for engineer in charges, planning teams, CGMs, HODs, DSOs, area safety officers, ताकि हम अकाउंटेबिलिटी हर लेवल पे ला सके CSM मॉड्यूल में। The second recommendation is policy making. We need to implement qualification criteria for all types of workforce, unskilled, skilled, supervisors and high skilled workers. और एक रिवॉर्ड एंड कंसिक्वेंस मैनेजमेंट भी हम लाना चाहेंगे टू रीइंफोर्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। रियल टाइम डैशबोर्ड रहेगा ताकि हम इंश्योर कर सके विजिबिलिटी ऑफ ऑल दी सेफ्टी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं। और रेगुलर CSM ऑडिट, जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है
पार्टीज को, तो आफ्टर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टार रेटिंग उनका ईयरली या बाइएनियली हम एक ऑडिट करें, ताकि हम देख सके कि वो मतलब उस काम के लिए उतने रेटेड हैं कि नहीं. To measure these efforts consistently, we have defined a structured KPIs which are captured in this slide. We will start with a regular workshop and handholding session for contractors development and CSM module, which will be planned at a frequency of एक एक कम से कम हम करेंगे एक per month per department. Next, we need to implement 100% job safety analysis and job hazard analysis coverage for all the risk jobs. और तीसरा रहेगा जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर है जो कि कवर्ड रहेंगे, सारे ही कवर्ड रहने चाहिए कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग सेंटर से. फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर साइट सेफ्टी ऑडिटर्स जो हम डेवलप करेंगे हर डिपार्टमेंट में, कम से कम वो 5% ऑफ डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव होने चाहिए. और नंबर ऑफ ऑडिट्स जो कंडक्ट करेंगे साइट सेफ्टी ऑडिटर्स जिनको डेवलप किया गया है, वो कम से कम मिनिमम 2 पर मंथ पर डिपार्टमेंट होने चाहिए. और नंबर ऑफ वेंडर्स डेवलप्ड एंड हैंडहोल्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी 100%, बिकॉज वी नो दैट कि सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को डिस्क्वालिफिकेशन और ब्लैक लिस्टिंग का कंसर्न है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं. तो थ्रू हम केपीआई में लेंगे कि हम कितने वेंडर्स को डेवलप किए हैं, जो कि जितने भी एक्टिव वेंडर्स हैं, कम से कम हमारा टारगेट रहेगा कि हम 100% लें. एसेट इंटीग्रिटी अब सर प्रेजेंट करेंगे, चौधरी सर. हाँ, good afternoon, sir. Myself Ashok Kumar Chaudhary. For asset integrity, key issues are proper identification of assets through assets register, aging plants and buildings, cultural and procedural gap, inconsistent management of change processes, and compliance monitoring effectiveness. Process brief. These consist of asset identification, asset classification. Assets are classified based on class A if it is highly corrosive environment, class B for moderate corrosive environment, and class C for low corrosive environment. And maintenance planning is also needs to be done. This includes preventive maintenance and condition-based maintenance, and maintenance execution. This includes critical structures to be given priority, and asset optimization and performance monitoring is also required. And data management, for this we require a system-based dashboard shall be developed to review critical structures and notification for compliance. Structure integrity checks. For building any structure, that inspection frequency should be 1 year. For civil structure, it should be 2 years, and for gas line, it must be 6 months. And this frequency can be revisited as per the health of the structures and the defect pattern observed. Legal requirement for structure asset integrity, as per Rule 5 of the Model Factory Rules, that certificate of stability is required by the competent person, and this is also covered in the state rules of different states. And for assets, there are international standards and requirements like ISO 55001. This provides a systematic approach for managing assets. And apart from that, there is API, that is risk-based inspections, and OSAS 45001 is also there. Now, the possible KPIs for this is the identification for the area for implementation of asset management plan. We have taken for 3 to 5 months, and assets covered under the plan. Within 1 year, we will do that. And compliance of the inspection plan, percentage of inspection done vis-a-vis plan, and repair compliance and abnormality. This is percentage of the point complied vis-a-vis observed. Root cause analysis of PSM incident and failure recommendation compliance. This is based on the risk of the structures. Asset cover under the plan, asset register to be prepared. This will be done within time frame of 1 year. And compliance of the inspection plan. This has to be monitored, that the percentage of inspection done vis-a-vis plan. Thank you, sir. Thank you, Ashok and ma'am. Thank you, team 4. We'll now move to the team 5, comprising of Sailesh Kumar from ISP, Tanushree Paida from Talkla, and Vaisan Reddy from Bokaro.
ওরা প্রেজেন্টেশন করে নিয়ে গেছিল, ঠিক আছে? আমাকে শুধু বললো তোমাকে বলো Is it visible, sir? It is, Hello. sir. Fine. Yes. Okay. Good, sir. All the participants, five, comprising of Sailesh Kumar, Surya Reddy, Tanusri Parida. We are going to present our governance structure, monitoring and accountability. That was our topic for what we are going to present. Outline of the presentation. द क्रिटिकल गैप्स इन द करंट गवर्नेंस. अभी की जो हम लोग की गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो टॉप से मॉनिटरिंग का है सिस्टम, उसके मैकेनिज्म में क्या गैप्स हैं, वो हम बात करेंगे. देन रीस्ट्रक्चरिंग द गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर. we will suggest some restructuring of current governance structure. Subcommittee on technology, we will recommend. Subcommittee on standardization, trade unions representation, and finally safety index for departmental and individual level. So in current organization governance structure, there is strategic differences when we compare plant to plant. There is no unified sale one structure. So we recommend that there should be unified structure for governance, so that people who are moving from one plant to another or one unit to another, they should not feel there is difference in culture, any safety culture difference. So critical gaps which is there in our system is like isolated learning. Some best practices are happening at one plant, but that is not taking place at another plant. So there is quite gap when we see implementation of safety systems. Inconsistent standards are made in with help of consultant and with help of SSO, but plant to plant it varies. There should be unified standard across cell. Resource disparities, we see that at some plant new technology or some novel ideas are being implemented, but there is dearth of resources at another unit. So there is resource disparity. We see it across cell. Weak accountability. There is no such consequence management is not so rigid or strong that in case of any safety lacuna or any incident, we have to implement that consequence management across sale. Strategic disconnect. Safety initiatives are not linked with our business strategy. We recommend that there should be a board level committee headed by our CMD sir, who should oversee our governance, safety management systems governance. So what the standardization will help? It will help consistent safety standard, resource optimization, unified metrics, and enhance accountability in case of any incident or occurrence of any unwanted incident, event. What we suggest that there should be one apex meeting chaired by our CMD sir on monthly basis, where our all DICs they will present our plant's safety performance, and we recommend that there should be quarterly review of incident, accident, or any dangerous occurrence and its root cause and its recommendation status for all the sale units, so that we could learn from incident or accident occurred at any sale plant or another steel unit. We recommend that there should be technology subcommittee on safety on various gaps which are existing now in our organization, like technical competency gap. Here we recommend that a cross-functional team comprising of IT expert, safety engineering, and SSO could help. Technology risk assessment subcommittee, incident analysis capability. We have to develop like every incident should be investigated. Every incident should be reported first, then investigated. That will bring a positive safety culture across organization.
safety technological integration. We are living in a technology world. Every time technology is changing, so we have to leverage the new novel technology into our organization. Unified data platform. Data are available with every plant units, but that is not in uniform manner. So we recommend that at corporate level, that should be at least one system who should cater all these needs. The committee, which we recommend, should comprise of head of automation, instrumentation, head of IT, CGM safety, head of electrical mechanical operation, representative from SSO, or any technical expert or consultant. We also recommend that quarterly review of digital technology and safety project by our director technical sir, to eliminate means duplication and effort. One unit can take leverage of another unit's knowledge, experience, etc. Now I request our Surya Reddy to Yeah. kindly. Yes. Good morning, everyone. Sir, next. Okay. So the next pillar of governance is the standardization audit subcommittee. This committee plays a critical role in ensuring consistency, compliance, and uniform execution of safety standards across all segments. Today, each plant, because of our own consultants, has developed its own way of implementing SOPs, conducting audits, and enforcing safety protocols. So this creates some kind of fragmentation and uneven performance. So this subcommittee goal is actually to drive three major functions. One is on the standardization, that is that ensuring all the safety processes, SOPs, and engineering controls follow a uniform corporate level standard, and also create a single reference model that guides every plant. Next is harmonization of audits, that is, bring consistency to audit methodology, frequency, scoring, and reporting, and introduce comparability metrics across the plant so that we will know where each plant is standing in respect to those metrics. Then the third one, the role of the committee is actually benchmarking and learning. So we know there are like other steel plants or other players in the this space, and there might be some best practices implemented there. Like what some of our colleagues has mentioned, safety leadership center, right? Introduction of the benchmarks and all. So one is we use these audit findings to identify the cross plant learnings that is inside the sale, and also get the best practices or share the best practices to elevate the safety ecosystem across the sale. So this committee establishes a disciplined mechanism where the compliance is institutional. Then next slide, sir. Sir, okay. So in the redesigned governance structure, a critical and progressive step is to inclusion of the trade unions, basically, right? And this presence ensures that safety decisions are not top down but co-created with the workforce. And why it helps actually is one is they bring some kind of real operational insight from the shop floor, insights that help us to design safety solutions that actually work in the practice. And these people will act as an early warning system because they often notice early signs of unsafe situations much before the management. So their representation builds some kind of real-time feedback loop for us for the near misses and the emerging risk. And also the most important is the trust. So when the workers see that their concerns are being heard at the highest level, they actively participate in the safety initiatives rather than resisting them. And this is the approach that Tata Steel has established at the 2015 itself. Either it is the digitalization drive or the safety drive. So the first thing they did was actually get on the meeting with all the trade unions to see or get the buy-in from them. So next slide. Next slide, sir. Yeah. So, to make the governance more meaningful, measurement must be rigorous, right? So, monitoring and accountability completes this entire governance loop. So, our goal of strengthening the accountability aspect is we need to define a clear accountability at every level. That is, targets for the HODs, managers, supervisors, and all the frontline teams. And we'll get the visibility through the dashboards, audit, and reviews. And we need to move beyond the lagging indicators. So instead of waiting for the accidents to occur, we track the leading indicators such as safety conversation, the safety talks, how many are taking place, near miss reporting, PPE complaints rate, adherence to the safety routines, and the hazard closure time. In how many days, let's say, an air miss was actually closed. Okay. And the last one is actually we need to establish strong review mechanisms, and because it is seen over and time that
accountability or making the people accountable for the violations or missing compliances is one of the weakest entities in the sale, right? So performance has to be reviewed at plant and corporate levels, ensuring there are no gaps in it. So for that, we are proposing a safety index actually. So the implementation is like there are two safety index cards that we are proposing. One is at the departmental level, which will be monitored monthly, and another is at the individual level, which is monitored uh, yearly based actually. So what it does at this departmental level, this tracks the adherence to the SOPs, audit scores, incident trends, closure rates, and proactive safety actions. And at the individual safety index level, it evaluates the frontline behavior, compliance, near miss reporting, and attendance in toolbox talks or training, right? So, why it is actually? It brings us uniformity in measuring performance across the company, and it enables transparent comparison of the departments, which department is standing at where, so that we will understand the root causes, we'll identify the issues. If there are any genuine concerns, we can provide the support to them from the top, and also if there are any intentional lagging from the employees in terms of the reporting and all, we will also understand them at the very initial level itself. And also it motivates the team to proactively improve the safety behavior. And so sir, can you go to the next slide? Salish sir. Next slide, please. Next slide. Right. So when we go for the implementation, a few things that are discussed are for the executive scorecards. There is, because like in the scorecards that we are measuring, we are only taking up the executives, right? So the contract workers, non-executives are not covered. But we feel that the responsibility of the contract workers and executives, non-executives should fall on the executives because they are the front line and they have to drive the safety in their own workplaces. Either it is lagging indicator also falls under the individual executive. For example, if a non-executive under me gets an accident in my workplace, and that is the responsibility of the in charge itself, right? And because we are actually adding responsibility to them, one way to measure is actually 20% of the weightage to be should be given to the safety KPI performance in the EPA's gradings, and also in the departmental balance scorecards when we measure. And the submissions, whenever the executive makes a submission in front of the for the respective KPI, it has to be validated by the DSO, and for the departmental submissions, they will be validated by the SED department. And departmental indexes are calculated and reviewed monthly, executives are annually. So the weightage scoring schemes, addition and modification of the KPIs, basically these are like as per the requirement of the plant, and they're subjective to the whatever the plant requires, or the feedback from the top management. So yeah, that's it from the Thank team. you. Thank you. Thank you, sir. We'll take the suggestions and the guidance at the last. So we'll move to the next team now. Team 6, comprising of Ms. Swati from Bhilai, Ms. Shipra from Bokaro, and Mr. Sham from Durgapur. Swati ma'am, you can load the presentation from here. Good afternoon, Rajesh. Thank you. Good afternoon. Please load the presentation. Swati, you must have got two connections. दूसरा connection काट दो. हाँ, इसीलिए yes, done that. हाँ, वो इको आ रहा है मैम. I hope my screen is Yes, visible. it is on the full screen. So Am I audible also? Yes, you're audible. Fine. Thank you. A very warm good afternoon to everyone, respected seniors and colleagues. We have already gone through 5 another pillars which are important to change the safety culture in SAIL. I am here on behalf of Team 6, which comprises me, Swati, Shipra from Bokaro Steel Plant, and Shyam from Durgapur Steel Plant, to present the pillar 6, that is demonstrate. Demonstrate, that is demonstrate leadership commitment through visible felt leadership. Now, the most important question arises, why is it needed? And the answer is, actions speak louder than words. This is a picture from one of our sale unit.
of our higher management and leaders, where we can see that many of them are not using safety shoes, and mobile phones are also being used. This is the role of VFL, visible felt leadership. For this, we have various recommendations like Pratyaksh, safety walkthroughs, Suraksha Shan, and many more, which are explained in detail in the upcoming slides. The first idea is of Pratyaksh, that actually talks about workshops, VFL workshop, and also SLDP. VFL workshop is planned for CGM and above. This is a one-day program where the importance of VFL will be discussed and will be trained about how to inculcate these values. And another one is Safety Leadership Development Program, which is a 3 days program and which will be done for all the executives across all the seniority. The output we expect from this is competency development of all leaders who are on frontline as well as middle management and the senior leaders. Second one is safety walkthroughs. The walkthroughs is planned in shops by senior management, that is by DIC and all EDs. As we all know that seniors, their concern will definitely work for us. So we are actually planning a safety walkthrough by DIC once a month and by all EDs twice a month. This will increase the visibility of leaders on the shop and will connect them with the employees and other members who are working on shop floor, and will basically motivate them for the safety initiatives. Then Suraksha Shan, that is a surprise visit by senior management. That is planned for all EDs and CGMs. For all EDs, the planning is for once a month, and for CGMs, that is from other shop, not of the particular shop, twice a month. And this will increase the discipline monitoring and ownership. The respective CGM of the shop will definitely ensure that the shop should be ready for this safety surprise visit and will enhance the safety of the particular shop. Coming to our next idea is Samvad. This is an open house communication to be taken by DIC once a month. For around the nomination should be around 200, and we actually want that these nominations should be selected randomly, maybe given by safety or LND or DIC secretariat, or maybe chosen by AI, to ensure that prepared nominations are not sent by department. This will ensure a true feedback from all different uh, people and employees from different areas. Also, we are recommending on-spot appreciation through Shabash Scheme 1. This on-spot appreciation will motivate people to give feedback and participate actively in such open house communications based on safety, that will enhance people and model of people to talk about the safety conditions of their areas. Coming to DSO, we are recommending that DSO must be someone from commanding position. He or she should be next to the HOD, so that the observations and safety issues can be closed as soon as possible. Observation closure time must be for fatal potential 48 hours, and for major issues it should be 1 week. These have already been implemented in BSP, and the is same is to be implemented in other units of SAIL also. Then we should focus on our new entrants. Main focus should be on our new entrants as we train and guide our kids uh, to prepare them for the future and inculcate culture in them. Similarly, we should train our new entrants because these are going to become our future leaders. We should train them in SLDP standards, safety standards training, shop specific hazards, factory act. All these trainings, general safety trainings and standards training should be the part of core
training module. One should be definitely trained, particularly in shop-specific hazards in all these trainings before sending them to shop. This will give new insights and new points for improvement in the safety of that particular area. These new entrants will act as a cultural change agents for us. Coming to safety KPIs, this has been discussed in, I think, almost in all presentations that safety KPIs should be fixed across all levels for all managers, maybe once a month or something. And again, one more recommendation is from our side that area wise ownership should be given to all frontline engineers, managers. Like they should given a particular area, assign a particular area, and they management should provide them safety budget for safety improvement in that area. This will ensure ownership, and that particular manager will be take responsibility for the safety of that particular area. This can be measurable also, and actually the details will be focused at all levels in the shop. And this will also build trust and motivate the young managers to do something good for the safety. Again, the reporting part, the DSO should report to SED, and safety in charge of the plant should report to EDSSO. This will increase more transparency. In BSP, DSOs already they are reporting to SED. Coming to hello, coming to department safety scorecard. Department safety scorecard. Uh, this will inculcate a feeling of competition among shops and will enhance the performance. As we already explained in the previous presentation, this is some departmental safety card format where these are all the points which will be there in the checklist, and marking will be given based on this. And finally, this will inculcate the departments to perform better. On the similar lines, we have a safety culture score idea also, which will have a competition among plants. This will be an annual award and will enhance the performance of the particular plant with the feeling of competition. It can be in this format. In this, the safety culture is divided into 7 dimensions, which are given weightages like leadership accountability is given 20%, audit and feedback is given 10%. Then scoring criteria of 0 to 10 is made against which each dimension 4 factors are there on which these 4 factors are marked. Then these all this score and dimensions are multiplied, and all these 7 scores are added to define the final safety culture score. This based on this score, a competition can be done, and the plant will performance will be evaluated on this basis. This assessment has already been done based on the SSO report of 23-24. And as we can see in this slide, that RSP scored 78, BSL 74, and like that. We have many other recommendations also. The few of them is like empathy. That is very important, I think. Empathy towards workers. And our suggestion for this is Chopal, organizing Chopal weekly by CGM, where every worker, maybe a contractual worker or a non-executive or an executive, every worker feels free to discuss anything with the CGM. They will feel have that feeling of owning them by the CGM. And second, the inclusivity for specially able people, that will also enhance and motivate them to work towards safety. And again, when a family is in despair, there should be some house visits by CGM, including HR, some notional salary for 3 months at least to help them, and a task force must be made for final claims to help these families which are already suffering a lot. These all pillars will lead to safety pillar model like this, where all these 5 pillars, that is drive, leverage, empower, strengthen, and enhance, will together support
demonstrate the leadership, VFL, visible self-leadership, which will ultimately result into safe self. That is all from Team 6. Thank you. Thank you, Swati. Madam, Thank actually, you. I am Afkas Behra. Just want to tell that last slide how you have measured that 78 in alkali ski plant is the highest. Don't know the slide you have Yes, sir. shown. That is the So that was based on some report, ma'am, you in the mentioned, Yes, right? sir. criteria. It was based on SSO reports, sir. Achha. Great. Maybe Uh, can you share the link I in the will, sir. chat? Kindly, If you kindly. have, that will help. Or maybe, sir, you can contact him, ma'am, Okay, directly, okay. or you can contact Kindly. ma'am. Abhishek, kindly share that also if you have. मैम शेयर को शेयर कर दीजिएगा सो थैंक यू स्वाति we have listened to all the teams their recommendations based on their findings and thank you all for patiently hearing to them and that itself shows there is a strong commitment in our leadership team for the safety in action also. We would now move to the next stage of the discussion and we would invite all the top leadership, all the seniors who are present over here for their inputs and the discussion and the suggestions. I'd invite all the EDs to please deliberate upon this and to steer the discussion. I would request ED Safety and ED HRLND to please steer the discussion, sir. We'd like to get the comments from the heads of operation, ED Works and ED Operations. So, ED Works, sir, Rakesh sir from Belize, sir. गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सारे सर प्लीज सर प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छे थे और ये हम लोग के थॉट प्रोसेस को भी दिखा रहा है हम लोग भी इस डायरेक्शन में काफ़ी जगह इन ऑल प्लांट्स कुछ ना कुछ काम हो रहा है बट इतना स्ट्रक्चर्ड वे में जो आप लोगों ने दिखाया है इसलिए आप लोग सभी को बधाई इसमें केवल मुझे एक चीज़ अच्छा आपका लगा कि जो हम लोग एआई का जो यूज़ कर रहे थे कि कैसे हम लोग मैंने भी एज ए सीजन उसको ट्राई किया था कि कैमरा जो है नॉर्मल कैमरा को और हम एआई के मॉडल से कि ट्रेन करें कि व्हाट टू सी तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है तो इसको हम लोग को जैसे कैसे फास्ट ट्रैक में लाना है सॉफ्ट फ्लोर पे जैसे स्पेशली मिल्स की वहाँ पे काफ़ी सारे कैमरेज हैं तो उसको कैमरा में अनसेफ एक्ट ये सब जो है या लोग प्रॉपर पीपी यूज़ किए हैं नहीं कर रहे हैं तो इसको मॉनिटरिंग करने में भाई अच्छा रहेगा एक और जो आप लोगों ने सजेशन दिया है कि डिजिटल कमांड सेंटर सेफ्टी कमांड सेंटर जो डिजिटल ये भी एक अच्छा आइडिया है कि हम लोग प्रोडक्शन को मॉनिटरिंग करने के लिए तो पीपीसी रहता है बट हम लोग जो सेफ्टी कंट्रोल है उसमें कुछ हमारी कमी रहती है तो अगर ये डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे तो हमको लगता है कि इसको काफ़ी बेनिफिट होगा तो आप लोग का सजेशंस काफ़ी अच्छे हैं और आप लोग मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आप लोग इन्वॉल्व रहे पैशन के साथ अपना इनको परसू करना है आप लोग कभी भिला भी आए तो हमें भी ठोकें कि सर आपने तो प्रेजेंटेशन देखा था कुछ किया कि नहीं तो आप जगाते रहे एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बाय एवरी टीम थैंक यू thank you sir for your encouraging words we request other ED Works also if connected sir please give your some valuable inputs ED operations भी ED यहाँ पे Operations, connected Anup ED sir. operations भी connected है sir Anup sir connected है sir To all, although I was eager to listen to each and every presentation very carefully, and but midway कुछ ना कुछ activities आ ही जाती है. Meanwhile, जो भी presentations हुए हैं, in fact, the very theme of the CTYM 2 years back, it was very apt, very मतलब बिल्कुल time specific था और that was really something which I wanted to अभी I mean I wanted to see each and every presentations और उस time में because I was also involved with some of the groups which those who were preparing for CTYM तो मुझे लगा कि there is definitely something very good coming to happen
एटलीस्ट विद सजेशंस एंड ऑल। एंड उसके बाद आप लोगों ने जो वर्कशॉप करवाया है, और बेस्ड ऑन those based on the presentations and the workshops, जो भी निकल के आया है काफी अच्छा है। बहुत वंडरफुल सजेशंस है, बहुत बढ़िया स्टडी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक दैट वट एवर सजेशंस हैव बीन गिवन शुड बी shared with all the units of the cell wherever there is something, or something is happening, and wherever there is safety is a challenge. Because what I think, despite all our efforts, बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं एवरीडे बेसिस पे भी, कई सारे चीजें की जा रही हैं, कई सारे काम किए जा रहे हैं, फिर भी ये लग रहा है कि वेयर आर वी लैकिंग, एक्सीडेंट्स फिर भी क्यों हो रहे हैं। हम क्यों नहीं अपने कमिटमेंट जो हमारा है, हर व्यक्ति का, हर एक आदमी का कमिटमेंट है टुवर्ड सेफ्टी, हर लेवल पे काम हो रहा है, हर लोग काम कर रहे हैं, फिर भी कहाँ वो कौन सी चीज है जहां हम मिस कर रहे हैं, हम क्यों मिस कर रहे हैं। तो ये आज के डिस्कशंस में, आज के प्रेजेंटेशंस में बहुत सारी चीजें जो उभर के आई हैं, अगर उन मुद्दों पे हम ध्यान दें, वी टेक केयर ऑफ दोज इश्यूज, बहुत सारे मतलब अच्छे पॉइंट्स है विच हैव बीन कवर्ड, तो अगर उनको देखें तो शायद हम आने वाले टाइम में, बिकॉज एज वी ऑलवेज से कि बिहेवियरल पार्ट जो है उसको सबसे ज्यादा एड्रेस करना है, उसके लिए हमको वी हैव टू रीच टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एट ऑल लेवल्स, एंड द टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो शुड गो टू द बॉटम मोस्ट लेवल जो वर्किंग लेवल में है। तो हर जगह हमको लोगों को बताना है कि बिहेवियरल एस्पेक्ट पे आपको जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा, लोगों को सुधार करना ही है, लोगों रोको टोको हो या जो भी तरीका हो, या तो दंडित कीजिए या फिर उनको अवार्ड दीजिए, जो भी तरीका है, लेकिन हमको कुछ ना कुछ इस तरीके से जो काम करना है तो करना ही है बिहेवियरल पैटर्न पे। और एआई के जो इंटरवेंशन से जो हमको बेनिफिट मिलेगा, दैट इज रियली, मैं अभिषेक के प्रेजेंटेशंस को देख रहा था, ऐसे तो का जो एफर्ट्स है, और उसमें जो एआई इनेबल्ड कैमरा की जो बात हो रही है, तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा केसेस को उसमें हम डालें, ज्यादा से ज्यादा अनसेफ एक्ट्स को डालें, और उसमें ज्यादा से ज्यादा हम को अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज नो बडी कैन सिट फॉर आवर्स टुगेदर एंड वॉच की व्हाट इज अनसेफ हैपनिंग। तो बात उसके बाद जो भी हमारे एआई इनेबल्ड है और एआई ट्यून्ड कैमरा से हमको जो मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। और आने वाले टाइम में बिहेवियरल एस्पेक्ट को एटलीस्ट, जो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है कि डिस्पाइट हैविंग अनसेफ कंडीशंस, अगर हमारा बिहेवियर सेफ हो तो वी कैन कम आउट ऑफ दी, वी कैन मैनेज दी वर्किंग प्रॉपरली, और एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड। दैट इज माय फर्म बिलीव। तो बिहेवियरल पार्ट पे जो है, हालांकि मुझे याद आ रहा है बहुत साल से बीबीएस के थ्रू कई सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो ये नई टीम जो है, नई पौध जो है, थ्रू CTYM, they have done a lot, they have deliberated on many issues, there are many more to be looked into, and let's all work together to see that कोई एक खरोच नहीं है। हम लोग हर दिन ये कमिटमेंट लेते हैं, हर दिन सुबह शपथ लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घटित होता है जो कि अल्टीमेटली मेक्स आवर डे बैड। एक दिन, एक अच्छे दिन की शुरुआत एक बुरे दिन में हो जाती है। तो अच्छा है, लेट अस ऑल वर्क अगेन, कमिटमेंट हमेशा फिर से नए कमिटमेंट के साथ हम करें, और लेट्स ट्राई टू ब्रिज द गैप। कहाँ वो रह जा रहा है, वो कहाँ वो छोटा सा चीज रह जा रहा है जिसको कि हमको ब्रिज करना है। लेट्स वर्क टुगेदर फॉर दैट। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much, sir. We would like if more suggestions. There are other heads of operations also there, so if they would like to comment. Other HODs, if they would like to give some comments, or heads of safety. Sir, good afternoon, sir. Abkas Vera speaking. Actually, in Raulkela, actually, Minister of Steel visit is going on, for I which understand. our staff slot is busy with I them. understand. I understand. Sir, I have seen all the presentations. So for my side, it is very good, but we have also adhering to many such things in our plant and trying our best. But these are the way they have presented. This will be a very nice one for us, so that we can also take further the safety ahead. Thanks to them, because they have also in, like, I want to comment in like Abhishek, and also CSM implementation. CSM implementation is also obstacle for all the plants.
because many areas as a RSP who have started this CSM implementation were unable to implement because of the some union pressures are there, something is there. So that has to be done in from the sales side, so that that is a one tool, so that we have to also give the mini trainings to the contractual employee, because if they will train, then CSM can be implemented. But that is facility must be established, like in Tata SLDC is there. So in our sales, there is no such training halls and facility like Tata or JSW is not there. So that will be the primary job for all the steel plant, international steel plant, to have a SLDC in on the steel plants. After that only you can start that implementation of CSM, because CSM is lacking with that different type of trainings and a certification of that, because the contractual people they are doing, they will try that someone will give them training and give certification so that they can participate, otherwise it will hampering to the different type of education in the jobs. That is the second thing. Third is that different type of activities they have already jotted down, that is a very macro planning they have done, that will also requiring for all of us. So thanks to the all the team, they have presented in very good manner. So I will be also asking personally to take out the presentation from them. So thanks a lot for Raulkela Steel Plant side, and thanks a lot, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. I'm PK Pal from Safety Engineering Department of ISCO Steel Plant. I'm leading this Safety, Environment and Fire Services. हमारा भी सेम है सर. ईडी वर्क सर ने एक डीवीसी में सम वाटर रिलेटेड क्राइसिस के लिए गए मीटिंग में, इसलिए नहीं अटेंड कर पाए. तो सर मेरा जो है कि ऑल द 6 प्रेजेंटेशंस वर वेरी गुड एंड इज इंफॉर्मेटिव. बट एक चीज मेरे को बोलना है कि सेफ्टी एक ऐसा चीज है जिसका कोई सिंगल विंडो इसका नहीं होता है. इसको मल्टीपल आपको ऑप्शंस प्ले करके सेफ्टी को कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है. सेफ्टी का जो बेसिक एक चीज है सर, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कल्चर. ओके, ये तीनों तो हमको हमेशा जितना भी आप डिजिटलाइजेशन करें, जितना भी करें, बट आपको बेसिक एटीट्यूड होना है. फर्स्ट थिंग, A to Z ऑल द पीपल्स, एंड देन द बिहेवियर चेंजेस, एंड देन बिहेवियर से कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. एंड इसके लिए जितना भी है हमको डिजिटल टूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, इंजीनियरिंग टूल्स ऑल यूज करना है. एंड हम लोग ऑलरेडी ये प्रेजेंटेशन में भी देखे हैं ऑल द, जैसे सेफ्टी गवर्नेंस हो गया, सेफ्टी इंडेक्स हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लाइक द कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन. दिस आर द वेरी गुड थिंग्स एंड दिस आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट एज ए कैप्सूल फॉर्म में सबको मिला के हम लोग को एक कॉम्पोजिट फॉर्म में हमको इम्प्लीमेंट करना है. सेकेंड, हमारा आईएसपी में हम लोग अभी जो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट, हम लोग इसमें डेफिनेटली चैलेंजेस था. पहले हम लोग 2024 फर्स्ट अगस्त से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट किए. बिगिन में देर वॉज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट उनमें एक एडवांटेज यही आया क्योंकि हम लोग किए कि हमारा जो कॉन्फ्लुएंस में है लार्ज ग्रुप इंटरेक्शन टाइप का करके, जितना भी हमारा अराउंड 100 कॉन्ट्रैक्टर्स जो बिग कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन लोग को अराउंड 10 सेशंस हम लोग ऑर्गेनाइज किया था, अराउंड हाफ डेज का, किसी में 2 घंटा का करके उन लोग को कन्विंस करने का कोशिश किया. और ये भी बोले कि उन लोग का एक ही चीज होता है कि फाइनेंस हमारा ज्यादा उसमें कॉस्ट बढ़ेगा, तो उनको वो चीज हम लोग को मिटिगेट करने का कोशिश किया. एंड अनदर थिंग, हम लोग आईएसपी में हम लोग बेसिक जो सेफ्टी पीपीज है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज क्वालिटी स्टैंडर्डाइज करने के लिए. जैसे आपको हेलमेट हो गया, सेफ्टी शू एंड रिफ्लेक्टिव जैकेट, एंड द रेस्पेक्टिव जो पीपीज है वो इंडिविजुअली करते हैं. एंड डिजिटलाइजेशन डेफिनेटली इज द बिग थ्रस्ट, डिजिटलाइजेशन में तो देना ही है. बट हम लोग का मेन अभी चैलेंजेस है, एनी प्लांट में देखेंगे अगर हमारा 60 to 70% होता है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स फॉर दैट, तो उनके लिए अभी हमको ज्यादा सोचना पड़ेगा. जैसे उनको नॉलेज, टोटल नॉलेज देना है, एंड उनको टूल बॉक्स स्टॉक तो ठीक है, बट दे शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि उनको जितना नॉलेज होगा तभी एक्सीडेंट प्रिवेंशन में आएगा. और सेल में हम स्टैटिस्टिक्स देखे हैं जितना भी है, हमारे अनसेफ कंडीशंस ज्यादा है रेदर देन अनसेफ एक्ट एंड बिहेवियर. तो अगर ये उल्टा होना चाहिए बिहेवियर में ज्यादा है लेकिन अनसेफ कंडीशंस में कम. एंड अनसेफ कंडीशंस इज टोटली इन द आवर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, आइदर इन द मैनेजमेंट रोल और द प्लांट्स हेड्स रोल. सो अनसेफ कंडीशंस हम लोग कोई हालत में हम लोग को बर्दाश्त नहीं करना है. एंड ड्यू टू जितना भी एक्सीडेंट होता है बहुत सारे अनसेफ कंडीशंस के लिए भी हुआ है, तो इसको हमको ध्यान देना है. दैट्स ऑल. और ये तो प्रेजेंटेशन अच्छा मिला ही है. नाउ वी विल इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स इन आवर प्लांट सर. थैंक यू. Thank you. थैंक यू.
Uh, Sir, I'll just raise one or two points for the deliberation of the house. दो तीन चीज मुझे थोड़ा सा निवेदन था सबसे। एक ये कि हम थोड़ा सा होलिस्टिकली सोच के ये डिफरेंट इनिशिएटिव्स को सिंक्रोनाइज कैसे करें और सिनर्जाइज कैसे करें। जैसे सेफ्टी सर्कल को कैसे बढ़ाएं, तो सेफ्टी सर्कल को मीनिंगफुल प्रोजेक्ट देने के लिए जो हमारे बाकी सिस्टम है, चाहे वो नियर मिस केसेस को जो डॉक्यूमेंट करते हैं, या सेफ्टी वॉक्स में जो हम अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं, तो मतलब वो डेटाबेस का यूज़ करके सेफ्टी सर्कल में के थ्रू अगर ऑपरेट करेंगे तो ग्रास रूट इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी, और ये जो हम अनसेफ कंडीशंस आइडेंटिफाई करते हैं उनका निवारण भी होगा। सो वी कैन सिंक्रोनाइज बोथ। सो दैट वाज वन थिंग दैट मुझे स्ट्राइक किया था। एंड ये सेफ्टी ऑडिट स्कोर या सेफ्टी डैशबोर्ड या सेफ्टी मैट्रिक्स डेवलप डेवलप करने का, आई थिंक अगर सेंट्रली वी कैन स्टार्ट कोलैबोरेटिंग फिगर आउट अ कॉमन पैरामीटर, तो आई थिंक वो एक कॉमन डैशबोर्ड से काफ़ी सुविधा हो जाएगी। बिकॉज एक हेल्दी कंपटीशन इसमें भी आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और बट प्रैक्टिसेस भी शेयर करने चाहिए। सिमिलरली ये जो हमारा कॉमन रिपोजिटरी की बात होगी, तो हमने भी सेफ्टी में एक फोरम क्रिएट किया है ये विज्ञान में। सेल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ साइट्स। आई थिंक कहीं ना कहीं हमको इन सबको जो डेटा पॉइंट्स हैं, नॉलेज पॉइंट्स हैं अबाउट सेफ्टी, उनको कहीं एक जगह लेके आना है, ताकि लोगों को पता है, यार उस साइट पे जाओ या उस जगह पे चले जाओ, सब कुछ मिलेगा, बाकी जगह के भी लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग को थोड़ा सा और एनकरेज करना है, और नॉलेज की टैगिंग भी करनी, ताकि लोग ढूंढ सकें, बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉलेज के बाद फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। एंड आईटी एनेबलमेंट में भी इनफैक्ट हमने भी सेल जेबीटी की कुछ लाइसेंसेस ली हैं। तो मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ अभी बहुत सारा डेटा लोगों ने जब सेफ्टी वॉक्स करते हैं, सी राउंड्स जैसे भिलाई में होते हैं, तो फोटो वोटो भी खींचते हैं लोग, या सेफ्टी वाले भी जब देखते हैं रोको टोको में भी फोटो वोटो खींचते हैं। तो इनफैक्ट हमको एक एलएलएम को ट्रेन करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल है ऑफ अनसेफ कंडीशन, जो उसको आइडेंटिफाई कर दी जाएंगी। तो अब बाद में अगर आदमी कोई फोटो खींचेगा किसी साइट की, तो वो ही विल हैव अ लाइब्रेरी फ्रॉम विच टू आइडेंटिफाई, हाँ यार ये भी अनसेफ कंडीशन है। तो आई थिंक वो जो चैट बोल रहे हैं कि जो चैट जीपीटी में किया है, वी कैन एक्चुअली यूज इट ऑन सेल जीपीटी, बिकॉज हमारी बहुत सारी अनसेफ कंडीशन हो सकते हैं, हम बाहर नहीं जाना चाहना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो बट है, हमारा अपना ही डाटाबेस इतना खतरनाक है कि उसी से बहुत कुछ सीख जाएगा आदमी। हाँ, so that could be done. Digitalization में I think we also need to involve SDDT in a much bigger way, and all the heads of IT in a much bigger way. और ट्रेनिंग में भी आई थिंक ये एक मेजर इशू सब जगह हो रहा है कि ट्रेनिंग को फोकस कैसे करें कि नाम मात्र ट्रेनिंग नहीं हो। ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेफ्टी ट्रेनिंग जनरल सेफ्टी ट्रेनिंग, मतलब स्पेसिफिक टारगेटेड हम क्या करवाना चाहते हैं, फ्रेमवर्क रहे। तो आई थिंक वी विल वर्क विद सेफ्टी, वी विल वर्क क्लोजली विद सेफ्टी टू हार्मोनाइज दैट एंड स्ट्रीम लाइन दैट। एंड आई थिंक हर सब प्लांट्स में सीसीबीसी डेवलप भी हो रहे हैं। उनमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो उन लोगों को आ रही है, हम सबको सहयोग देना है। किसी भी सेंटर को चलाने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और ट्रेनर चाहिए। तो वो ट्रेनर हमको प्लांट वगैरह से, या चाहे कुछ रिटायर्ड लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके एम्पेनल करके, हमको सफिशिएंट ट्रेनर भी चाहिए, ताकि वो सीसीबीसी जब बने, इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, तो रोज चलता रहे। कई बार आदमी और इंस्ट्रक्टर की अभाव में वो नहीं चलता है। तो वो सब भी हमको थोड़ा सा वी हैव टू वर्क ऑन ऑन दैट। एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हमारी कंपनी में अच्छी हो रही हैं। uh, हमको इंटरनली एक एक थोड़ा सा सेफ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा लोगों को, जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। हाँ, सेफ्टी संवाद होता है, बहुत कुछ होता है, वर्कशॉप भी काफ़ी होते हैं, बट आई थिंक पीपल शुड ओपन अप मोर, not only in terms of sharing their own vulnerabilities and what things they have learned कि क्या क्या नहीं करना है, but also open up more in terms of taking suggestions from others. ये बात सेफ्टी की नहीं है, हमारी कंपनी में और जगह भी इस साल का थीम जैसे वन सेल कोलैबोरेटिंग, कॉन्सेप्ट क्या है कि हर कोई अपने बच्चे को इतना प्यार करता है कि दूसरे बच्चे की क्वालिटी नहीं दिखती है। तो थोड़ा सा एक दूसरे का भी सम्मान करते हुए कि अगर दूसरी जगह कोई अच्छा आ रहा है, तो वन अपमैनशिप नहीं करके अडॉप्ट कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली हम हार्मोनाइज करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दीज वर सम ऑब्जर्वेशन। एंड रही बात सर शेयर करने की, वाई वी वांटेड दिस वर्कशॉप वाज दिस, ये रिपोर्ट शेयर कर चुके हैं हम।
वी ऑलरेडी शेयर्ड इट, बट होता है क्या, कागज आता है मेल में तो आदमी को समझ में नहीं आता इसका क्या करें यार, देख लो नीचे जाके पढ़ लो कुछ। अब आपने देखा है कि इसमें क्या हुआ है, तो वी विल सेंड इट अगेन, राजेश यू कैन सेंड दोज रिपोर्ट्स अगेन to all the heads of safety and all the heads of operation and ED works, because अब थोड़ा वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि है क्या इसमें, एंड आई एम श्योर बहुत सारे पॉइंट्स दे विल पिक अप। और बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली हमको नई करनी नहीं है, पुरानी चीज़ों को देखना है कि उनको ठीक कैसे करें। ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी में कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, तो उसको कैसे वर्कआउट करें। आई थिंक दीज वर सम पॉइंट्स दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम the presentation. So I think idea was we let us synergize. Idea was let us leverage each other and across functions and across units हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकेंगे, सेल का ओवरऑल सेफ्टी कल्चर वर्ल्ड क्लास हो जाए। These were some observations. I think if no other ED has or senior officer has anything to say, we should take the closing remarks from ADSSO. Yes, sir. So thank you, sir. We request Ramakrishna sir, AD safety, please, sir. Thank you, Rajesh. Thank you, Dar साहब। ये दर साहब का इनिशिएटिव है कि लास्ट मैंने 10 days हमको बैठने नहीं दिया, इसको कैसे भी करना ही है सर, बिकॉज वी प्लान इट, इज द थर्ड टाइम इट हैज बीन पोस्टपोन्ड, बट इट हैज टू बी कन, बिकॉज वी वांटेड टू हैव ए इंटरेक्शन विद द होल ऑफ द टीम। एंड जैसे राकेश सर बोले हैं, इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट ए सेफ्टी सेंटर to look into the whatever AI tools we want to use, like Datta Sahab said. And Datta Sahab clearly, Mane rightly pointed out that behavior that plays the vital. बाकी हम लोग कुछ भी करें, ये लगाए या कैमरास लगाए, कुछ भी लगाए, उसके ऊपर एक्शन नहीं करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस। द फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट्स विद मी, आई। जैसे राउरकेला से बेहरा साहब बोल रहे थे, सो मैंने ऐसा कोई लैब्स कुछ चालू किया क्या, and I think ISP and DSP have tried something to do that outside the just perimeter of the plant, so can have a look at it, ठीक है, हाउ वी कैन डू इट। मैंने इवन वो लोग ये ट्राई किया कि जैसे फॉल फ्रॉम हाइट का सिमुलेट करके दिखाने के लिए एक्चुअली उसके लिए भी फैसिलिटी तैयार की है, सो वी कैन हैव अ लुक एट इट। एंड आरपीएल वगैरह जो स्कीम्स आ रहा है उसको हम अच्छे से यूज करना है। क्या होता है हम लोग, अरे आज वो क्या सेफ्टी वाले के एक चिट्ठी आया, 2 लोगों को भेजना है, यार भेजो, किसी ना किसी को भेज दो, एंड मेनी ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस लाइक दैट, ओनली द 2 guys विल बी गोइंग। So we have to avoid that. We should clearly add it. इसमें क्या है, जैसे फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है, because they are interacting every day in day out with the workforce that is working under them. We are not talking about only contract labor. We are talking about our own personnel also. So we can see where a guy is lacking and where he needs somewhat. जैसे हम लोग क्या स्किल मैपिंग वगैरह करते हैं, तो उसको हम लोग सीरियसली लेना चाहिए। एक कैसे भी एक पेपर बना के भेज देना है करके नहीं है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग वगैरह करते हैं, उसमें थोड़ा वी हैव टू बी सीरियस। द फ्रंटलाइन माने टॉप ब्रस नीड्स रियली हेल्प फ्रॉम द फ्रंटलाइन मैनेजर्स इन दिस, because top brass cannot go and see it daily and day in and day out on the shop, ठीक है। और दूसरा है, जैसे पॉइंट आउट किया गया आप लोगों का बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, बिकॉज आप पूरे टीम्स जो है ना बहुत अंदर तक जाके इतना मेहनत करके पूरा बनाया, एंड इट इज टोटली कवर्ड एवरीथिंग, बट ओनली द थिंग इज इसमें कुछ कुछ जगह में हम रोड के बारे में भी क्या सोचना है, उसके बारे में थोड़ा इनकॉर्पोरेट करना है अपने को। इसमें हम लोग सिर्फ शॉप फ्लोर के बारे में बात की है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बिहेवियर, और एक छोटा सा चीज है, मैंने आई एम टेकिंग ए कपल ऑफ मिनट्स, सॉरी। हम लोग इतना बोलते हैं, लेकिन अभी डीएसपी में वी पीपल आस्क्ड आवर डीएसओस टू गिव एवरी डे शाम को 5 बजे 5:30 बजे आप घर जाने से पहले यू हैव टू गिव योर 4 observations, 5 observations और 3 observations, वट एवर ऑब्जर्वेशन इज देयर। आज का क्या ऑब्जर्वेशन है आपका सेफ्टी के बारे में,
So if we can do these kind of things our own self, तो हमारे लिए केसेस बहुत सारे बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। माने उसमें जब ईडी साहब विजिट करेंगे, राकेश साहब या दत्ता साहब शॉप फ्लोर में आएंगे, उनको बोलने के लिए जगह नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, माने उनको मेहनत करना पड़े जगह बोलने के लिए कि यहाँ तकलीफ है देखो करके बोलने के लिए उनको मेहनत करना पड़े। We can create that, but only thing is we have to own it all. It is not only the case of a DSO or ASO. It is the case of everybody. If anybody is observing a unsafe condition, please kindly put it down and give it to your CGM on the same day. उसके लिए कोई टाइम और इसका शेड्यूल की जरूरत नहीं, जाते जाते भी देख लेंगे तो। और वो हम लोग जब एमटीए गए थे, शायद एक हम लोग को दिखाया था कि काश उस टाइम में मैं बोला रहता तो वो बच गया रहता। ये चीज नहीं होनी चाहिए, जहां टोकना है वहीं तुरंत बोल दीजिए। सो इट्स a team effort from, even though it is top driven, but it is a team effort of the whole, frankly to say, executives। नॉन एग्जीक्यूटिव्स में क्या है, हम लोग बोलते तो हैं लेकिन वो कुछ संकोच करेंगे सामने आके बोलने में। वी हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी टू them, and this will definitely change our total माने कल्चर को, जो अभी हम लोग एक चेंज लाया है उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। So definitely we will achieve that goal of safe steel and a smiling steel, because that smile belongs to the whole families working with us. Okay, so I think Thank you, sir. Thank you, sir. we can do well Thank you, with sir, this. for Thank you. sharing your vision in a so candid manner. And as you rightly said, sir, we need to call spade the spade, and we need to work accordingly, sir. So thank you, sir. Sanjay sir, can we move ahead with the vote of thanks and closing, sir? Thank you, sir. So I will moving ahead with the vote of thanks, sir. First of all, I would like to thank the top management of the SAIL, the chairman, because the idea of having this topic germinated from our top leadership, our director personnel, our directors, and our chairman. They thought that this is a very pertinent topic for everyone, especially our young managers, to have we need to listen their perspective. They were very open in having these insights from our young managers. So thank you for their guidance. I'd also like to thank all our senior executive directors, all our functional heads who have joined today and who have been constant, being the flag bearer for the safety across the different plants and units. And as you have already all said, sir, this is a continuous journey. So we will be continuing forward together as a company in this journey, sir. I would like to thank all the plant HRDs also for successfully uh, encouraging the participants. Those many of them are not over here, but a few were selected to come to the finalists, but many other have also participated in the plants. So I'd like to congratulate all of them also who have participated at the plant level also. I would also like to thank our corporate CNIT department for providing the link for this meeting. And I'd like to thank all the other participants who have patiently joined and listened and for their time and effort, because I see lot many participants from the various departments, from uh, SMS, from HRCF, and from the mills, from all the different plants and units. So it's very heartening to see that so many people are willing to join. In fact, I'd like to very share to you, sir, also that yesterday I was also getting some queries कि ऐसा कुछ मीटिंग हो रहा है CTYM का for only for the EDs. Can we also join? Can the not? I didn't got direct response from the safety, sir. सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं, क्योंकि वो तो है ही सर, उनका होना सही, बल्कि प्लांट के अदर डिपार्टमेंट्स के भी सीनियर्स भी के साइड से भी रिक्वेस्ट आ रहा था. सो इट्स वेरी हार्टनिंग फॉर देम टू टर्न अप एंड कम ओवर हियर. सो आई हार्टली थैंक यू ऑल, सर, फॉर स्पेंडिंग द टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल. Thank you, everyone, sir. Thank you, sir. So with this, we'll be
closing the meeting, sir. Thank you. And we will be sharing the presentation. I'll share this presentation in all Yes, sir, CGM's group, all ED's group, and we'll send it to all ED works by mail also. Sure, sir. Sure. Kindly. With Thank the you, sir. link Thank of the recording of this, sir. We will be Yes. sharing, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your time. Thank you. Thank you, everybody. कौन है?